Hello there, my dear students. Welcome to Grade 10 Physics. Topic Light, lecture number 8. Subtopic Spherical Lens. Learning objectives for today's session. Student will be able to understand what are spherical lens and types of spherical lens. Basic term related to spherical lens. How to draw concave and convex lens. Here are some of the reference book for the session: NCERT Grade 10 Science, Physics by Lakshmi Singh and Manjeet Kaur, Living Science Physics by Dheeraj M. Doshi, and the question bank is prepared from this website cbse.online. This is not an official website from CBSE. Lenses play an important role in our daily lives. Lenses are used in making many optical instruments such as camera, microscope, telescope, and film projectors. We have already studied from lecture number 1 to lecture number 6 about mirrors and working of mirrors based on reflection. And in last session we have studied, in the last lecture, that is, we have studied about refraction. So the working of lens is based on the refraction of light rays when they pass through it. So let us define here that what is lens. A lens is a piece of transparent optical material bounded by two refracting surfaces which are usually spherical, or one surface spherical and the other is plane. Spherical lenses can be divided into two types: convex lens and concave lens. Let us differentiate between what is convex lens and concave lens. जैसा हम लोगों ने मिरर में डिफरेंशिएट किया था कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, वैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे अबाउट कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. So when you are writing down these points, here I will suggest you to make this topic more clear. I will suggest you कि आप इसको compare करना मिरर के साथ, हर एक पॉइंट्स को कंपेयर करना, सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि बच्चों लोगों में ये डिफिकल्टी आती है, हमेशा आती है, कि कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्केव लेंस समझ लेते और कॉन्केव लेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो कॉन्वेक्स लेंस समझ लेते, बिकॉज ऑफ जो कॉन्केव मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज फॉर्मेशन की, वो काफी सिमिलर है कॉन्वेक्स लेंस जैसी, और जो कॉन्वेक्स मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफी सिमिलर है कॉन्केव लेंस की. तो मैं आपको ये टॉपिक इजी करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि टॉपिक को बार बार मिरर के साथ कंपेयर कीजिए. अगर आप फर्स्ट टाइम लेंस पढ़ रहे हो तो ठीक है, पहले लेंस पढ़ लीजिए पूरा अच्छे तरीके से एंड देन मिरर टॉपिक पे जाइए. अगर आप मिरर टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो दोनों टॉपिक को कंपेयर करते समय पढ़िए, टॉपिक बहुत इजी जाएगा. ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस, if you observe the convex lens, it is thicker in the middle and thinner at the edges. Thicker in the middle and thinner at the edges. While concave lens is thinner in the middle, thicker at the edges. A parallel beam of light passing through this lens converges at a point of refraction. A parallel beam of light passing through this lens appears to diverge from a point after refraction. It is a converging lens, it's a diverging lens, it has a real focus, it has a virtual focus. Now for these 3 points, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ये 3 पॉइंट जो है
आपका क्लियर हो जाएगा। सो वी हियर गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, some important terms related to spherical lenses: center of curvature, aperture, radius of curvature, principal axis, optical center, principal focus and focal length। ओके, तो अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस बनाना है तो हम लोग देखते हैं वो कैसे बनता है। सो वी टेक अ सर्कल हियर, और ये सर्कल बनाने के लिए एक सेंटर की जरूरत पड़ेगी, सेंटर ऑफ द सर्कल। सिमिलरली आई विल टेक अनदर सर्कल हियर, उस सर्कल को भी बनाने के लिए मुझे और एक सेंटर की जरूरत पड़ेगी। जब ये दो स्पीयर को मैं ओवरलैप करता हूं तो मुझे मेरा कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। ओके, इन सिमिलर मैनर आई विल मेक कॉन्केव लेंस। एक सर्कल, मुझे सर्कल बनाने के लिए मुझे एक सेंटर की जरूरत पड़ेगी, ये सर्कल बनाने के लिए मुझे सेंटर की जरूरत पड़ेगी, एंड आई विल गेट माई कॉन्केव लेंस। डेफिनेटली आई विल कीप सम अपार्ट। ओके, तो ये हर एक जो पॉइंट्स होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस, ये सारे जो पॉइंट्स है, एपरेचर, ये सारे जो पॉइंट्स है हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है लेंस में। ओके, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं वापस से कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस बनता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ स्पेसिफिक रेडियस। एज्यूम कर लेते हैं कि जो रेडियस है लेट अस से 6 सेंटीमीटर का है। सिमिलरली मैं और एक सर्कल स्पीयर ड्रॉ करूंगा, और स्पीयर जो अगेन जो होगा 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, सो स्पीयर का जो एक पार्ट होगा फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्लैक सर्कल, एक पार्ट यहाँ से होगा और दूसरा पार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको ओवरलैप कर दूँ मुझे एक परफेक्ट लेंस मिल रहा है, और मुझे जो पार्ट नहीं चाहिए मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे मेरा जो है कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली मुझे मेरा कॉन्केव पार्ट भी उसी तरीके से मिलेगा। I will draw again the circle of same radius, definitely दोनों सर्कल का रेडियस सेम होना चाहिए, and then the upper part will be, the upper and the lower part will definitely be made up of lens, glass का बना हुआ रहेगा, transparent material रहेगा, so that will be my concave lens. So that part will be my concave lens. Definitely now I'm using here paint software, so यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट अगर आप बनाओगे using your geometrical structure वो काफी आसानी से बन जाएगा। Since now we have understood कि convex lens and concave lens बनता कैसे है, let us define the terms that are related to the convex and concave lens। तो यहाँ पे हम लोग convex lens की help लेंगे to understand some basic terms। So the first term is center of curvature। So the center of curvature of a lens is defined as the center of spherical surface from which the lens has been cut। Okay, so center of curvature जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कल बनाते वक्त कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। Second point is aperture, the maximum portion of the spherical surface from which diffraction take place is called the aperture of the lens। So in this case the aperture will be AB will be my aperture जहाँ से maximum refraction can take place। Third point is radius of curvature। The radius of curvature for a lens is the radius of the sphere of which the lens surface is a part। So in this case OC1 and OC2 are the radii of curvature for the two lens of the surfaces। Okay,
तो जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो होगा OC1 मेजरमेंट हम लोग करेंगे, और सिमिलरली OC2 डेफिनेटली दोनों इक्वली होंगे। पॉइंट 4, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। अगर आप ये कंपेयर कर रहे होगे मिरर के पॉइंट्स, तो काफ़ी सारे पॉइंट सिमिलर ही है, सारे टर्म्स, मोस्ट ऑफ द टर्म जो है वो सिमिलर ही है, टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर्स एंड द टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस था, मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस था, सो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through the two centers of curvature of a lens is called the principal axis of lens. Optical center. The geometrical center of the lens is call its optical center. तो ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिस वजह से जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन यूज करेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक में जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेंस जो है कॉन्वेक्स लेंस परफेक्ट बने। ठीक है। फोकस, a point on the principal axis at which parallel rays of light after passing through a lens converge or appear to diverge after passing through the lens. ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सिंस कॉन्वेक्स लेंस ये मैंने डिस्कस किया था कि कॉन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम है वो है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ऑल द रेज ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज करता है एट अ सिंगल पॉइंट, वाइल कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है, और जो पॉइंट पे जो वो कन्वर्ज कर रहा है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। ओके। सिमिलरली फॉर कॉन्केव लेंस it appears to diverge at one point, that is a focal point. Focal length, the distance between optical center and principal focus of a lens is called focal length. So distance between optical center and focus point is called focal length. Similarly in concave lens as well, the distance between the optical center and the focus point is called the focal length. Okay, now don't get confused between the focal length and radius of curvature. Remember that जो radius of curvature होता है वो twice the focal length होता है, जैसे concave mirror में था। So convex and concave lens जो है हम लोग using rounder भी बना सकते हैं एंड या फिर using protractor भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊंगा कि कैसे यूजिंग राउंडर बनाया जा सकता है कॉन्वेक्स लेंस, और यूजिंग प्रोट्रैक्टर हम लोग कैसे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस बना सकते हैं। ओके, सो यूजिंग compass or rounder we can also draw convex lens. So you must be knowing that how to find a midpoint using rounder, how to find a midpoint. So what we do is we take a random distance and we place a point of a rounder at one end of that segment, and we draw an arc. We draw an arc. So after drawing the arc, again I am going to place this rounder to the other end of the segment, and again I will draw another arc here. So once I'm done with this, you will observe that I'm getting a perfect convex lens here. Once we are done with this, we can draw a dotted line using our scale here. So this 2 point will exactly coincide and we will get our optical center here, which means here you can instead of drawing a straight line, you can show it with a dotted line. So which means that
this optical center divide a convex lens into two equal parts. Once we get this optical center from here, we can use our scale and a perfect measurement we will take and will mark our focal length. Suppose if you are taking a scale and I'm keeping here on the optical center, exactly coincide on the optical center, I will measure 3 centimeter for focal length and 6 centimeter for center of curvature. And the same I will do the other end. From the optical center, I will take 3 centimeter for the focal length and another 3 centimeter for center of curvature. So that means the radius of curvature will be equal to 6 centimeter. Now, how to draw a convex lens using a protractor, scale and pencil. So first of all, what you need to do is draw a 2 centimeter segment. Once you draw that 2 centimeter segment, okay, the half of that 2 centimeter will be 1 centimeter. Let me mark all the 3 points so that there will be no mistake. So this 1 centimeter will be my optical center of the lens of my convex lens. Okay, now I'll make use of protractor and I will the first starting point or the starting point of the line segment, I will coincide it with that point and I will draw at least 4 lines. I should cover at least 4 lines, 1, 2, 3, and the four lines from above and below. The 4 lines I have covered. Okay, now similarly another segment, the other end of the segment, I will again coincide with the 90-degree and I will draw the other part of my lens. Now if I join this 2 point, I will find out that it exactly passes through my optical center. It exactly passes through my optical center. This means that the lens is divided into 2 parts. Now what I can do is, now I can extend the line. Now what I can do is extend this line, this segment that will be named as principal axis, in such a way that I will extend the line and make sure it coincides the line. I will extend this line. So from the optical center, I will measure 6 centimeter, which will be considered as the center of curvature, and the half of it will be considered as the focal length. So that means 1, 2, 3. So this 3 is my focal length, and the other 3 centimeter will be also be equal, that is 1, 2, 3. So I will name this as f1 and this will be 2f1. Note 2f is equal to c, that is center of curvature. Okay, the other part of the lens also I will draw it in a similar manner. I will extend the line. I will count again 1, 2, 3. So this will be my focal length and this will be my center of curvature. So this will be f2 and this will be 2f2. Okay, so I'll be placing my object. I can place my object here between 2f1, f1, beyond f1 or infinity. So I hope you understand.
कि कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस. Now for drawing concave lens using protractor, scale and pencil, we'll again draw a segment of 2 centimeter 2 सेंटीमीटर जिसका हाफ हो गया एग्जैक्टली जो हाफ हो गया 1 सेंटीमीटर. सो दिस 1 सेंटीमीटर द पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा. Now I'll make use of protractor here, and again now remember I'm drawing a concave lens which is thinner at the center, so thinner at the center and thicker at the edge. So here at 90 centimeter at 90 degree, sorry, at 90 degree I will draw my concave part. So again from above 4 lines I have taken, and below also I have taken 4 lines. Remember that it is exactly coincide at 90 degree. Similarly I will make use of protractor from the other end of the segment, and it should coincide with 90 degree, and again I will draw above and below 4 lines. Okay, once I done with that I will just join the upper and the lower part of the concave lens, and from the optical center I will draw a dotted line, so it divides my concave lens exactly into 2 equal parts. Okay, now what I can do here is I can extend this line which is known as principal axis. So to place a point F, we'll keep a constant distance, so while drawing it will always be simple. So my focal length will always be 3 centimeter, so that will be 1 2 3. So if focal length is 3 centimeter, my center of curvature will be 6 centimeter, that is 4 5 6. So this becomes 2f1, and this becomes f1. Similarly 1 2 3 centimeter, 4 5 6 is my f2 to f2. As we are only consider this part as the object is placed here and the image formation also take place and this part only, so it's not necessary to show f2 and 2f2, but still just for understand this sake, as it's a lens and lens both the ends will have focus will. That's it for today. Thank you for watching the video. If you have any doubt you can post in the comment section. Until next time, stay indoors, stay safe.